Hello guys, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनीज. नाउ जब हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी की बात करते हैं the very important class of drugs which are mainly acting on our kidneys are known as diuretics. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में we carried on with our first important class of diuretic agent and that was carbonic anhydrase inhibitor. In our previous lecture we saw the basic mechanism of action of our carbonic anhydrase inhibitor. आज के इस वीडियो लेक्चर में we are once again going to start with our carbonic anhydrase inhibitor. We will do a little bit of revision के जो हमने पिछले क्लास में कवर अप किया था. Then we will go to some important drugs which are coming in the class of diuretics, that is carbonic anhydrase inhibitor. Now ये जो carbonic anhydrase inhibitor है ये हम कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, यानी कि what is the therapeutic application of our carbonic anhydrase inhibitors, that also we are going to cover up in this particular video lecture. जब हम थेराप्यूटिक यूज की बात करते हैं वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो ड्रग्स है वो कौन से पेशेंट में हमें नहीं देने हैं, यानी कि दैट इज अवर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अवर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ अवर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो लेक्चर, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल. Press that bell icon, like this video and share it with your friends. So let's start with our today's revision of our carbonic anhydrase inhibitors. Now हमने previous video lecture में देखा था कि ये जो हमारे carbonic anhydrase inhibitors होते हैं they are mainly working on our proximal convoluted tubule. So as you can see on your screen, here is the representation of our proximal convoluted tubule. Now when we are giving the patient carbonic anhydrase inhibitors, what we are doing, we are inhibiting the production of our H plus ions and bicarbonate ions. Now यहाँ पे जो proximal convoluted tubule पे जो cells होते हैं and ये जो cell के luminal side पे we have a very important antipode system and the name of that antipode system is sodium hydrogen antipode system. So whenever we are giving the patient carbonic anhydrase inhibitor, we are inhibiting the production of this H plus ions and अगर H plus ions ही नहीं बने, what is happening in the normal condition is जब ये सोडियम लूमेन में आता है, this sodium is getting reabsorbed into this particular cell and on exchange ये जो हाइड्रोजन है is lost into the lumen. So अगर हमने पेशेंट को carbonic anhydrase inhibitors दिया है that is inhibiting the production of our H plus ions. So H plus ions अगर नहीं बने, so this sodium, अगर ये सोडियम अंदर भी आना चाहेगा, still it is not going to enter in this particular cell because we know कि यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होना बहुत जरूरी है. So this sodium as it cannot enter into this particular cell, that means it is not able to get reabsorbed back into our body. ये जो सोडियम है then it will move on to the further regions of our nephron, that is ये loop of Henle पे जाएगा, distal convoluted tubule पे जाएगा, collecting tubule पे जाएगा and finally it is going to get eliminated out into our urine. and हमने last time ये भी discuss किया था कि जब भी सोडियम होता है सोडियम is always followed by water molecules. so जैसे ही यूरिन में सोडियम eliminate out होगा, sodium is followed with water, so ultimately water का भी elimination होगा and this particular effect is known as diuresis effect and ऐसे जो drugs होते हैं they are known as diuretics agent. Now understand one more important thing. normal condition में क्या होता था कि जब ये H plus ions बाहर आता था, this H plus ions was combining with our bicarbonate ions. Now अब हमने क्या किया है कि ये जो H plus ions का प्रोडक्शन है वो हमने इनहिबिट कर दिया है. So this H plus ions is not getting out into this particular lumen. So ये जो bicarbonate ions के साथ H plus ion react करता था in the normal condition, वो अभी when we will give carbonic anhydrase inhibitor,
this bicarbonate ions is not going to react with our H plus ions. So उसके वजह से क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो भी सोडियम के साथ इट इज गोइंग टू गेट एक्सक्रीटेड आउट इनटू अवर यूरिन. एंड हमें ये पता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अवर बाइकार्बोनेट आयंस. बाइकार्बोनेट आयंस आर बेसिक इन नेचर. सो अगर बाइकार्बोनेट आयंस यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, it will make the environment, or we can say the pH of urine towards a more alkaline side, and that was one of the important side effect of our carbonic anhydrase inhibitors. Now अगर ये carbonic anhydrase inhibitors जब हम patient में देते हैं, it is promoting the loss of bicarbonate ions in the urine. That means can I say कि जो body में bicarbonate ions का level है वो कम होगा. अगर बॉडी में बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल कम होगा तो जो पीएच है वो भी कम हो जाएगा. दैट मीन्स कैन आई से कि जो बॉडी का ब्लड पीएच होगा दैट विल बी टुवर्ड्स मोर एसिडिक साइड, एंड दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ अवर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर. One is it promotes the alkalinity of our urine, and second one is metabolic acidosis. Now आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि ये जो दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर साइड इफेक्ट इनटू अवर थेराप्यूटिक यूजेज. लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ अवर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में मेनली वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट एग्जांपल. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज एसिटाजोलामाइड. Now ये जो एसिटाजोलामाइड होता है it is prepared as oral formulation or it is also available as an injectable formulation. The second important name of the particular drug is which can be used topically, that is it can be used as eye drops, are brinzolamide and we have dorzolamide. Now let us move on to the therapeutic usage of our carbonic anhydrase inhibitors. The very first important use of our carbonic anhydrase inhibitor is it can be useful in the condition of glaucoma. Now the question is how our carbonic anhydrase inhibitors can be useful in the condition of glaucoma. But before understanding the therapeutic usage, we must understand what do we understand by the concept of glaucoma. So glaucoma is nothing but जब हमारे आईज में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है, ड्यू टू दैट इंक्रीज इन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर राइज इन अवर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज अ ग्लोकोमा. नाउ व्हेनेवर वी आर गिविंग द पेशेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ये क्या करता है, इट इज रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर. अगर एक्वस ह्यूमर कम फॉर्म होगा दैट मीन्स कैन आई से कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो भी कम होगा. अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हुआ है वी हैव ट्रीटेड द कंडीशन ऑफ ग्लोकोमा, हेंस इट इज वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा. नो ग्लोकोमा की कंडीशन में मेनली वी आर गिविंग आई ड्रॉप्स, एंड हमने अभी पढ़ा है कि there are two important examples of our topically carbonic anhydrase inhibitors. The very first one is brinzolamide and the second one is dorzolamide, which can be useful in the condition of glaucoma. Now moving on to our second important application of carbonic anhydrase inhibitor is it promotes the alkalinization of our urine. Now what is the importance of making our urine slightly alkaline? So क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट्स जो ड्रग लेता है, बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग ऑफ अ ड्रग जो यूरिन का पीएच होता है दैट इज बिकमिंग एसिडिक. सो अगर यूरिन का पीएच एसिडिक है दैट मीन्स जो पीएच ऑफ यूरिन है वो कम है, एंड अगर हमें नॉर्मल रेंज पे अगर पीएच को लाना है वी नीड सम एजेंट्स विच कैन इंक्रीज द पीएच. दैट मीन्स हमें ऐसे एजेंट्स देने होंगे दैट इज मेकिंग द यूरिन स्लाइटली अल्कलाइन. फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस वी कैन गिव कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. वी नो कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं
they are promoting the loss of bicarbonate ions. हमने अभी पढ़ा था कि मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ अवर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इज इट प्रमोट्स द अल्कलाइजेशन ऑफ अवर यूरिन. सो अगर बाय गिविंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स it will promote or it will increase the loss of bicarbonate ions in the urine. That means bicarbonate ions अगर ज्यादा यूरिन में प्रेजेंट आउट होंगे so it will make the pH of urine to be rise. That means ये थोड़ा बहुत alkaline region पे pH को लेके आएगा and it is very useful to convert the acidic urine into the alkaline urine. So the second important application of our carbonic anhydrase inhibitor is it promotes the alkalinization of the urine. Now the third important application of our carbonic anhydrase inhibitor is mountain sickness. Now the question is, what do we understand by the concept of mountain sickness? Now I have an important question for you. जब हम high altitude पे जाते हैं, what is the concentration of oxygen? यानी कि जब हम high altitude पे होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन कम होता है? यस, यू आर राइट. एट हाई अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड लेवल पे जाते हैं, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज गेटिंग लो? सो एट हाई अल्टीट्यूड देयर इज लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन. सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव द पर्सन टेक्स इन मोर ऑक्सीजन. And in return, that person is breathing out more carbon dioxide. Now, as the person breathes out more carbon dioxide, the concentration of carbon dioxide in the blood decreases. Now, why we are focusing on our carbon dioxide? ये जो CO2 होता है, it is getting combined with our water molecule and it is resulting into formation of carbonic acid. Now what is the important role of our carbonic acid? ये जो carbonic acid होता है, it is making the blood pH acidic. So अगर एक particular person है जो high altitude पे गया है, high altitude पे ऑक्सीजन का लेवल हमें पता है कि लो होता है. So in order to survive, that person is taking in or breathing in forcefully more oxygen and उसके contrast में जब patient breathe out करता है, जब ब्रीथ आउट करता है, ही इज एलिमिनेटिंग आउट मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अगर पेशेंट ज्यादा CO2 एक्सक्रीट आउट कर रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द बॉडी? विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द बॉडी विल बी हाई और इट विल बी लो? यस, यू आर राइट. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी विल बी लो. व्हाई? Because more and more carbon dioxide is getting out, eliminated out from our body. अगर ज्यादा CO2 हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो रहा है, so relatively can I say कि जो concentration of CO2 है inside the body that will be low, right? Now जब low concentration of CO2 है inside the body, do you think the CO2 molecules will react more with our H2O molecules or it will react less? The answer is it will react less. Why? Because as I told you the level of CO2 inside the body is low. So lesser number of carbon dioxide is reacting with our water molecules and उसके वजह से क्या होगा? There will be less production of H2CO3. Now H2CO3 का normally role क्या था? It was promoting the pH of our blood to be in the acidic range. Now अगर H2CO3 का production अगर कम हो रहा है, can I say कि जो blood का pH होगा वो थोड़ा सा rise होगा? That means जो blood का pH पहले acidic था in the presence of H2CO3. Now H2CO3 कम produce हो रहा है, so blood का pH थोड़ा सा rise होगा. That means can I say कि जो blood का pH होगा that will be slightly alkaline in nature. So now if the person breathes out more carbon dioxide, there will be less production of carbonic acid, that is H2CO3, and blood का जो pH होगा that will rise. That means it will become slightly alkaline in nature, and this particular condition is known as respiratory alkalosis.
Now ये respiratory alkalosis अगर है, we can give the patient carbonic anhydrase inhibitors. So the question is, why we are giving the patient carbonic anhydrase inhibitor? The answer is very simple. हमें ये पता है कि जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देते हैं पेशेंट को, इट इज प्रमोटिंग द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. दैट मीन्स अगर बाइकार्बोनेट आयंस यूरिन में ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, सो रिलेटिवली जो बाइकार्बोनेट आयंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे वो कम होंगे. एंड हमने एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट भी पढ़ा था ऑफ अवर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सो अगर पेशेंट का पीएच, ब्लड पीएच ज्यादा है, by giving such kind of drugs which can produce metabolic acidosis, जो पर्सन का ब्लड पीएच है वो एसिडिक रेंज में आएगा, यानी कि पर्सन का जो पीएच होगा वो रिड्यूस होगा एंड जो पर्सन का जो नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच है वो मेंटेन्ड रहेगा. दैट इज व्हाई वी आर गिविंग द पेशेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. सो कार्बोनिक inhibitors produces metabolic acidosis, so it can bring the pH back to normal. Now the fourth important therapeutic application of our carbonic anhydrase inhibitor is it can be useful in the condition of epilepsy. But nowadays we are not using carbonic anhydrase inhibitors much in the condition of epilepsy because we have better drugs for epilepsy. Now moving on towards our contraindication of our carbonic anhydrase inhibitors. The very first important contraindication of our carbonic anhydrase inhibitor is liver failure. Now liver failure में why carbonic anhydrase inhibitor is a contraindicated? First we will understand what is the normal functioning of our liver. Now ammonia जो होता है, this ammonia is getting converted into urea inside the liver. Now as the liver has failed, this ammonia will not be converted to urea. And this ammonia can go to brain and it can cause a coma, and this is known as hepatic coma. Now as the liver has failed, so the entire responsibility of eliminating out that particular ammonia molecule is with our kidney. So kidney में क्या होता है कि ये जो ammonia है, that is NH3, that means it is present in unionized form. Now NH3 inside our kidney, it is getting converted or it is combined with our H plus ions and it is getting converted into our charged molecules. यानी कि inside our kidney में क्या होता है कि ये जो ammonia है that is present in an unionized form, this ammonia is combining with our H plus ions and it is getting converted into NH4 positive, that is ionized form. Now हमें ये पता है कि जब भी हम कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल्स लेते हैं, दिस चार्ज मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस अवर सेल मेम्ब्रेन बिकॉज जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है इट प्रिवेंट्स द चार्ज मॉलिक्यूल टू गेट रीअब्सॉर्ब्ड और वी कैन से टू एंटर इनटू अवर सेल. सो हमने क्या किया है, बाय कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू चार्ज मॉलिक्यूल्स, ये जो NH4 पॉजिटिव है दैट इज नॉट गोइंग टू गेट रीअब्सॉर्ब्ड एंड अगर ये रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, it is getting eliminated out into our urine. Now carbonic anhydrase inhibitor देने के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट है, we know कि वहां पे H plus ions का प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं. That means can I say कि जब ये अमोनिया आयंस आएंगे, that is NH3, ये जो NH3 है it is not going to get combined with our H plus ions, यानी कि we are not producing this particular ammonia into the ionized form, because whenever we are giving the patient carbonic anhydrase inhibitor, what it is doing, it is promoting less production of this H plus ions, and because of less production of this H plus ions, ये जो ammonia है it is not going to react with our H plus ions, and अगर ये ammonia unionized form में होगा it can get reabsorbed. So the level of ammonia inside the body बढ़ जाएगा and it can also enter into our brain and cause coma, and this particular condition is known as hepatic coma. So hence carbonic anhydrase inhibitor, as it is lessening the production of our H plus ions, and due to that lessening production of
H+ आयंस जो अमोनिया बॉडी में प्रेजेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड इट कैन लीड टू हेपेटिक कोमा. Hence, carbonic anhydrase inhibitors are contraindicated in the condition of liver failure. Now moving on to the second important contraindication of our carbonic anhydrase inhibitor is COPD. So COPD stands for chronic obstructive pulmonary disease. Now the question is why this particular carbonic anhydrase inhibitors are contraindicated in the condition of COPD. Now COPD में क्या होता है? The person is finding it difficult in breathing. हमें ये पता है कि नॉर्मली जब इंसान ब्रीद इन करता है the person is taking in oxygen and when the person is breathing out that person is breathing out carbon dioxide. Now COPD के कंडीशन में क्या होता है? As the person is finding it difficult to breathe, that person is not able to breathe out carbon dioxide properly. यानी कि कैन आई से इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड what will be the concentration of carbon dioxide inside that particular human body? वो हाई होगा या फिर लो होगा? The answer is the concentration of CO2 inside the body will be high. Why? Because the person is finding it difficult to expel carbon dioxide. So अगर person carbon dioxide कम expel out कर रहा है so relatively जो बॉडी में concentration of CO2 होगा वो ज्यादा होगा. एंड हमने अभी ये पढ़ा था कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद अवर H2O टू फॉर्म H2CO3. सो अगर पेशेंट के बॉडी में ज्यादा CO2 प्रेजेंट है, more CO2 is getting combined with our H2O molecules and more will be the production of carbonic acid. अगर कार्बोनिक एसिड ज्यादा हुआ so जो बॉडी का ब्लड pH होगा वो भी बढ़ जाएगा and this particular condition is known as metabolic acidosis. Now patient का जो pH है वो already acidic range में है and हमने एक important side effect भी पढ़ा था of our carbonic anhydrase inhibitor that it promotes the promotion of the metabolic acidosis. So patient already acidic range of pH से suffer कर रहा है. By giving carbonic anhydrase inhibitor, more will be the metabolic acidosis problem. Hence, it is contraindicated in the condition of COPD. So यहाँ पे वही लिखा है, it will worsen the metabolic acidosis seen in the patients with COPD. Now moving on to the side effects. The very important first side effect is paresthesia. The second side effect is increased stone formation in kidney. Now why there is increased stone formation in the kidney? हमें ये पता है कि when we are giving the patient carbonic anhydrase inhibitors, जो यूरिन का pH होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि it will be more in the alkalinization or we can say alkaline side पे जो pH होगा यूरिन का वो होने वाला है. Now alkaline यूरिन में क्या होता है कि ये जो कैल्शियम होता है it has the tendency to form stone. So stone formation का जो प्रॉब्लम है that is very high when we are giving carbonic anhydrase inhibitor. So the second important side effect is increased stone formation in the kidney. And the third one is hypokalemia. Now why our carbonic anhydrase inhibitors are producing the side effect that is hypokalemia? जब हम ये पढ़ेंगे that is the collecting tubule के बारे में हम जब पढ़ेंगे at that time I will tell you कि why by giving diuretics, not only carbonic anhydrase inhibitors, when we are giving the patient loop diuretics, thiazide diuretics, ये सारे के सारे diuretics का एक important side effect होता है that is hypokalemia. So when we will be dealing with the collecting tubule, at that time I will tell you कि why the side effect is there that is of hypokalemia. And हमने पहले ही दो important side effect cover कर लिए थे that is alkaline urine and the second one was metabolic acidosis. So these were the important side effects of our carbonic anhydrase inhibitor. So that's it for today's video lecture. In the next video lecture we are going to start with the second important class of our diuretic agent and that is loop diuretics. So see you in the next video. Till then, see ya, bye bye, have a good day.